Hello everyone, welcome to today's Dhann ki Baat. My name is Rohit Singre, Senior Technical Analyst, LKP Securities Limited. Let's look at the Nifty Bank first, and then we will look for the sector which are looking good, and then the stock also. So let's start with the Nifty first. Nifty, I think we have been managed to closed on the a weaker note. Can we see these four candles consecutively, four candles in last four session, which again suggests that some profit booking from the higher end. Now one need to be very level specific if you look at the particularly index, because just a minute, I will draw the some of the technical uh, drawings. Let's see, look at here. So index has again take the resistance from its upper trend line. Okay, can we see the upper trend line? It took the resistance from that level and started showing some sort of profit booking. Okay, so यहाँ से index नीचे गिरा, and then again now where one can expect the support. See, already index has decisively broke the 15,000 level, which was a very good support on the downside. So उसके नीचे अगर close हुआ है, which means that some cautious stance one need to be adapt on the Nifty 50 first of all. तो थोड़ा cautious stance रहेगा यहाँ पर, because 15,000 was decisively broke, and we on the other note that we closed below 15,000. तो वो भी हम लोग को एक दिमाग में रख के चलना है कि 15,000 के नीचे क्लोज हुए तो we may see some sort of more profit booking comes in until and unless we trade below 15,000. अगर वापस हम लोग 15,000 के ऊपर आ गए, then we may see some sort of relief rally, because again 15,000 supports will be intact. बट जब तक उसके नीचे ट्रेड करेंगे, then we may have to see some sort of again selling pressure comes in. ठीक है, सो 15,000 विल बी अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर दी कमिंग वीक. ठीक है, तो जब तक उसके नीचे रहेंगे वी मे सी सम सॉर्ट ऑफ मोर प्रॉफिट बुकिंग, बट if we manage to sustain above 15,000, then we may see some sort of relief rally towards 15,250, which is the immediate hurdle, and 15,400, which is the overall hurdle on the higher side. तो 15,000 का काफी अहम लेवल है. नाउ let's say if we manage to sustain below 15,000, then we have the next supports, which is at 15,750 zone, which was the previous swing high breakout. यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से breakout आया था. Then the next support goes at 14,750. So if we sustain below 15,000, then we may see some sort of selling pressure towards 14,750, which is the strongest support on the downside. So 15,000 will be a make or break level on the downside. 14,750 will be a strong support, and on the higher side 15,250 will be the hurdle on the higher side. So these are the range for the Nifty particularly. Now let's look at the Nifty Bank also, what Nifty Bank is suggesting us. Just a minute. So if you can see again on the Nifty Bank also, if you can see on the monthly chart, it took the resistance again from the upper band. दिख रहा है यहाँ पर अपर बैंड से इसने वापस रेजिस्टेंस लिया, and we have been witness some sort of profit booking comes in. But again, like Nifty close below 15,000, which is the sign of weakness, or which is the sign of cautious stance on the Nifty. But here in Nifty Bank में थोड़ा स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हुआ है अब तक. Now why I'm saying this? Because of this support. See, these are the the thin support, one can say. This was the thin support जहां पर निफ्टी बैंक ने अभी तक होल्ड किया है. सो द सपोर्ट्स आर कमिंग समवेयर अराउंड 35,400 जोन. सो until unless Nifty Bank is holding about 35,400, this sort of weakness is still not there in the Nifty Bank. But if it managed to breach 35,400 decisively, then we may see a very good fall in Nifty Bank, because as such वहां पर कोई supports नहीं है. Okay, the next support is lying straight away somewhere around 33,000 32,800 marks. ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है. So there would be a good hammering we may see on Nifty Bank if it managed to breach 35,400. So longs need to trail their stop losses at 35,400. उसके नीचे again we may see a sharp hammering in Nifty Bank, because as such there is no good support in the Nifty Bank. Now the final support which I said at 32,850, यही एक नीचे का सपोर्ट है जो कि काफी अच्छा लग रहा है. But again Nifty Bank, if Nifty Bank managed to hold 35,450 or 35,400 odd levels, then we may see some sort of again relief rally or pullback towards this resistance, which is somewhere around 37,000 37,200, which is the immediate hurdle on the higher side. Nifty Bank के अंदर जो hurdle है ऊपर की तरफ यहाँ पर है. So 37,000 37,200 के levels हम लोग को देखने को मिल सकते हैं
अगर 35,400 होल्ड किया निफ्टी बैंक ने, अगर नहीं किया तो एक डिसिसिव मूव हम लोग को निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द निफ्टी बैंक। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेक्टर। ठीक है, थोड़ा हैमरिंग हुआ है मार्केट के अंदर, थोड़ा सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो है ना सेक्टर विच इज वन कैन से इट इज नॉट लुकिंग रोबस्ट, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं ये सेक्टर परफेक्ट लग रहा है एकदम। इन टूडेज डीकेबी sector are not looking robust, but we need to look for those sector which is trading near the supports और जहां पर काफी अच्छे breakouts हुए थे। So the first sector which came across to me is the Nifty PSE। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, सो निफ्टी पीएससी, निफ्टी एनर्जी, मोटा मोटा दोनों में सेम ही स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे। लुक एट द ब्रेकआउट, दिस वाज द ब्रेकआउट जोन, यू नो this was the breakout zone which is some one can say the cup and handle breakout hua tha, and again it went up. And look at the volume activity, fantastic volume activity has been witnessed on the breakout. Again this is the breakaway gap also is there, so which is again the positive sign. So again nifty pse thoda zyada better lag raha hai। Any dip somewhere around this level which is around 3080 which was the previous breakout zone, अगर यहाँ पर आके होल्ड करता है और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो इट विल बी अ फैंटास्टिक पुल बैक, हम लोग जिसको बोलते हैं पुल बैक ट्रेडिंग, वहां से हम लोग को देखने को मिलेगा। सो 3080 विल बी अ फैंटास्टिक सपोर्ट इन निफ्टी पीएससी बैंक, एंड सेम गोस विद द निफ्टी एनर्जी आल्सो। सो निफ्टी एनर्जी, इफ यू लुक एट निफ्टी एनर्जी, यहाँ पर भी काफी बड़े ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले थे बड़े चार्ट्स पर। कैन वी सी दिस इज द मंथली चार्ट एंड शार्प बुलिश कैंडल हैज फॉर्म्ड सो फार सो नाउ, और अभी 10 दिन बाकी है वैसे मंथ क्लोज होने में, बट अगेन दी मूव इज स्ट्रॉन्ग, दी मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग इन बोथ दी सेक्टर निफ्टी पीएससी एंड दी निफ्टी एनर्जी। तो ये दो सेक्टर हम लोग को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कमिंग वीक के लिए। कोई भी डिप आती है यहाँ पर, सो अगेन विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट आर दी स्टॉक्स one can keep a radar on? The first stock that came across to me is the BPCL। ये दोनों सेक्टर में है, सेक्टर के स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने बताया मोटा मोटा सेम स्टॉक रहेंगे। नाउ इफ यू लुक एट दी BPCL, इट हैज डिसिसिवली ब्रोक। ये जो कप एंड हैंडल इसका था, इसने काफी अच्छे से ब्रेक किया, दो प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिला बीपीसीएल के अंदर, बट अगेन द स्ट्रक्चर इज क्वाइट अ गुड। वॉल्यूम एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड ऑन द ब्रेकआउट वाज फैंटास्टिक। सो स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक बढ़िया है। ठीक है, सो बीपीसीएल कैन बी a stock which is on the radar। now where are the supports for the BPCL? 415 410 काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस डालने हैं अपने, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 460 तक का एक बार मूव देखने को मिल सकता है। सो दोज हु आर होल्डिंग कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 415 410, ये इमीडिएट सपोर्ट्स यहाँ पर ही है। नाउ अनदर स्टॉक विच इज द HPCL, जस्ट अ मिनट। HPCL के अंदर भी काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले थे हम लोग को। कैन वी सी द नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट? just a minute, I will draw the trend line so that you can easily see। देखो काफी नीट एंड क्लीन, इट हैज एक्टेड रेजिस्टेंस सो मेनी टाइम, 1 2 3 4 4-5 बार ये रेजिस्टेंस का काम किया था ये लाइनर, बट इट गॉट डिसिसिवली ब्रोक लास्ट वीक। देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी इज विटनेस्ड ऑन HPCL आल्सो। तो अगेन HPCL लुक्स रोबस्ट। इसमें अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट्स की बात करूं तो 240 230 इज द इमीडिएट सपोर्ट्स इन द HPCL। जब तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, एक बार काफी बढ़िया मूव हम लोग को शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है HPCL के अंदर। इसमें वीकली चार्ट्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। सो आई थिंक HPCL BPCL looks robust at the moment, and there is one more stock which is I need to focus on, which is NTPC। NTPC की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, राइट। सो अगेन दिस वाज द ब्रेकआउट जोन। If I draw the breakout, so this was the breakout, falling trend line breakout देखने को मिला था, and look at the volume activity, very good volume activity has been witnessed। So again if you can ask me where are the supports for the NTPC, it is near 100। so it is until unless it is holding above 100, the momentum will intact, and it can move towards 107, which is the immediate hurdle on the higher side, and once it cross the 107, then 120 125 would be the levels one need to keep a radar on for the NTPC। now the second sector which trading near the supports, which has the little bit cautious stance also, but जब तक वो supports break नहीं करता है तब तक उसमें one can say the momentum is still intact on the positive side, which is the Nifty Auto। अगर हम लोग देखें निफ्टी ऑटो का, तो there are two trend line I drawn। ठीक है, यहाँ से तो पहला ये this is rising trend line we say technically, ठीक है, and there is one more intermediate trend line I drawn।
और जहां पर वो सपोर्ट ले रहा है, तो अगर ये लेवल्स अगर निफ्टी ऑटो के अंदर होल्ड कर जाते हैं, then we may see some sort of pullback in Nifty Auto. So again, like I said, Nifty PSE, Nifty Energy looking robust at the moment, but Nifty Auto will be keep a radar on, little bit cautious stance one can say on Nifty Auto once it will break these supports. Okay, जो supports line है अगर ये break हो जाएगी तो इसमें थोड़ा बहुत पैनिक हम लोग को देखने को मिल सकता है, but again if it managed to hold these levels, we may see a good pullback in Nifty Auto. Now, the stocks which is on my radar are the first stocks came across to me is the VTL. It has seen a very good breakout over the Dhann textile. If you can see on the daily chart, this is the bullish flag pattern it has formed. ठीक है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, बट अगेन द ब्रेकआउट वाज नीट एंड क्लीन. ठीक है, सो यहाँ पर आप ध्यान रखकर चल सकते हैं. इफ यू नो इमीडिएट ऑन द इमीडिएट बेसिस 1090 or 1050 are the fantastic supports on the downside, and if these levels are held, then we may see 100 or 150 points upside in Vardhaman Textile. The second stocks which has given the strong breakout is the Raymond. काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को. लुक एट द वॉल्यूम एक्टिविटी इन द रेमंड, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. एक रेंज था इसका, रेंज से डिसीजली बाहर निकला है, दिख रहा है. लुक एट द वॉल्यूम एक्टिविटी, आई थिंक लाइफ टाइम वॉल्यूम हैज हैपेंड इन द रेमंड. तो अगेन द स्टॉक्स लुकिंग रोबस्ट एट द मोमेंट. जब तक ये यू नो इफ यू टॉक व्हाट आर द सपोर्ट्स फॉर द रेमंड व्हिच इज 350, जब तक 350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, द मोमेंटम विल बी इंटैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड. एंड द अनदर स्टॉक्स व्हिच केम अक्रॉस टू मी इज द यू नो वबाग, वाटेक वबाग. अगर इसका भी हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी नीट क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिला है हम लोग को. सो अगेन दी रेक्टेंगल ब्रेकआउट इज हैपेंड हियर. ठीक है, देख रहे हो, काफी स्विफ्ट ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, एंड गुड वॉल्यूम एक्टिविटी आल्सो एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट. So again, this immediate and the strong support lies at 230 and 220. So again, in a dip will be again a buying opportunity. Until unless it is holding about 230, 220 zone, it is good to go towards somewhere around 260, 300 odd levels. So that's all from our side. So Nifty Bank, again levels one need to keep a radar on. The sector which we have discussed is the Nifty PSE, Nifty Energy stock sector, which is looking robust at the moment, and the stocks particularly which is the HPCL, BPCL, and the NTPC. Now, other than from the sector, we have discussed the VTL, which is Vardhaman Textile, Raymond, and the Wabag. So that's all from the that's all from our side. Thank you so much for watching this. Thank you so much.